Hey guys, how's everyone? This is Sagar and this is my first vlog. I'm heading to Lonavala for a breakfast ride from Mumbai. So, without wasting further time, let's catch on. Let's start. यार देखो, ब्रेकफास्ट तो कोई अकेला नहीं करता, तो राइड कैसे कोई अकेला करेगा। इसलिए मैं अपने फ्रेंड एलिस्टर को अपने साथ लेके चल रहा हूँ। ना आई एम राइडिंग माई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एंड वो माशा है अपने रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 पे। लेट्स राइड। गाइज एंड बाइक का रिलेशनशिप ऐसा होता है जैसे एक कपल का। आई एम वन ऑफ दोज गाइज हु वाज पैशनेट अबाउट बाइक्स, बट फॉर मी बाइक राइड इज नॉट जस्ट पैशन, इट्स ब्लिस, इट्स एडवेंचर, इट्स एन एक्सपीरियंस। आई हैव गॉन फॉर मेनी बाइक राइड्स बिफोर. माई फर्स्ट बाइक राइड was Mumbai to Goa in the year 2011. Now I thought of capturing those kilometers into moments and sharing them with you. Enjoy. इतनी देर से पेट्रोल फिल करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट पेट्रोल है कि मिल ही नहीं रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, 2 पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं था। यार ये कैसी किस्मत है, पेट भी खाली है एंड टैंक भी। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं, पेट भी भरेगा एंड टैंक भी। तो फाइनली एक ऐसा पेट्रोल पंप जिसमें पेट्रोल भी है, यस दैट्स राइट, पेट्रोल भी है, हमें मिल चुका है सैन गोवंडी रोड पे। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। यस, वैसे तो हमने अपना पेट्रोल भरा लिया है, अब जस्ट वेट करें कि एलिस्टर जल्द से जल्द अपना पेट्रोल भरे और हम अपनी राइड कंटिन्यू करें। अंटिल देन आप मॉर्निंग व्यू एंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यार कैमरा की आंखों से देखना और अपनी आंखों से देखने में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मेरा बस चले तो आपको ये व्यू इन रियल में दिखाऊं, बट किस्मत, क्या कर सकते हैं।
finally we have crossed the last McDonald's of Mumbai and we are heading towards Karjat. But before Karjat, we'll be having a quick stop at Panvel. Now why Panvel? Yes, because of one and one reason only, Panvel का famous दत्ता वड़ा पाव. Because हर बाइकर वहाँ पे रुकना पसंद करता है. Yes. उसके पहले हम बात करेंगे इस ब्रिज की जो अभी हम लेने वाला है. 1 साल पहले जब ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था तो बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती थी, स्पेशली बाइकर कम्युनिटी को. रीजंस बीइंग ट्रैफिक, बैड रोड कंडीशंस एक्सेट्रा. बट द फाइनल रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. देखो एक बार, हेवन है. थैंक यू गवर्नमेंट. आज लोनावला काफ़ी दूर लग रहा है ने. वैसे I've seen a lot of bikers heading to Lonavala for a quick ride. क्यों नहीं यार, आज संडे है तो पब्लिक ने सोचा होगा कि चलो थोड़ा चेंज मिल जाएगा जैसे हमें मिल रहा है. और वैसे भी यार 90 to 100 किलोमीटर्स की तो जर्नी है. हाँ, बट राइड को इंटरेस्टिंग बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है भाई, छोटी बात नहीं है. मतलब खाली राइड करके क्या फ़ायदा. थोड़ा व्यूज़ देखो, थोड़ा पिक्चर्स क्लिक करो, थोड़ी अननोन जगह पे जाओ, बनाओ इंटरेस्टिंग. किसने रोका है तुम्हें. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ माई 11th टाइम टू लोनावला, बट हर बार मुझे कुछ अलग मिलता है देखने के लिए. आप सब लोगों से बात करते करते 60 किलोमीटर्स कब चला लिए पता ही नहीं चला. एंड अब हम पहुंचे हैं द फेमस दत्ता वड़ा पाव. जी हाँ, रास्ते पे जो बाइक्स हैं उसको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम अभी पहुंच गए हैं. वैसे दत्ता स्नैक्स इज़ फेमस फॉर इट्स ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्नैक्स, राइट फ्रॉम वड़ा पाव, मिसल, साबुदाना खिचड़ी टू पोहे. यार बात करते करते मुंह में पानी आ गया. जल्दी से पहुंचते हैं लोनावला एंड करते हैं ब्रेकफास्ट. चलो. As I didn't know the exact location, I went ahead and had to return.
क्या करूं। सो गाइस, अपनी ये ब्रेकफास्ट राइड यही ख़त्म होती है। आई होप यू गाइस एंजॉयड, एंड इफ़ यू हैव देन प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and stay tuned for our next adventure. See ya.